So already I have explained you that we have three types of authentication functions. One is called as a message encryption, in which we are using the ciphertext as a authentication. Okay. The second one is a MAC, that is message authentication uh, code. Okay, that is authenticator, that is a fixed length code. Then the third one is the hash function. The difference between the hash function and the MAC is that your hash function is independent of the key. We are only using the hash function over the plaintext message without using the key. And as far as MAC is concerned, we are using the message authentication function over the plaintext along with the key, Okay. And SHA function we have seen as far as the hash functions are concerned. So we have seen the algorithms depending upon the number of outputs. We have the name as SHA-1. 1 stands for 128, SHA-1512, SHA-256. Okay, so that was related to the SHA, that is secure hash function. And yesterday we have seen the block diagram, the overview of the block diagram, and then we have also seen what actually happening in the buffers and the functional blocks. Okay, then it is not an XOR operation, it is modulo 2 to the power of 64 to 56. Okay, and we have also seen the output comes to be H0, H1. So H0, H1, then we have seen W0, W1, W2 till W79, as well as we seen K0, K1, K2 till K79. Okay, and we have taken the what H0 and given to the individual module additions, and ultimately we are getting the code that is called as SHA code, that is 512. The output is 512. Okay, so that is about the SHA. Now we are going to see the second authentication algorithm. The next authentication algorithm, which is the combination. Pay attention towards my words. We are saying the next authentication algorithm, which is the combination of hash function and the MAC. That's why the name comes to be HMAC. Okay, HMAC algorithm. HMAC algorithm. So hash function along with the MAC. So already you know the difference between the H function and the MAC. That is, H function is independent of the key. But here we are using the key. Here we are using the key. So before you apply the hash function over the plaintext message, okay, pay attention whatever I'm saying now. Before you apply the hash function over the plaintext message, you have to append S bits. And how do you generate these S bits? These S bits are generated by using the key. Okay, so can I say that HMAC algorithm, in HMAC algorithm, we are applying the hash function over the plaintext message, but before applying the hash function over the plaintext message, the plaintext message is appended with S bits. We are going to see what are the S bits. That plaintext message is appended with the S bits. And how do you generate these S bits? These S bits are generated by using the secret key. And you know that the secret key is shared amongst the sender and the receiver. The secret key K is shared amongst the sender and the receiver. Okay, so in HMAC, we have to take the help of key. Okay, so it is a combination of MAC and hash function. So that's why it is HMAC. It is called as HMAC. Okay, so we are going to see how this is formed. We will see the block diagram, and at the last we will write down the steps. Okay, once you have understood the block diagram, it will be easy for you to write down the steps. So just write down under the HMAC algorithm, just write down 1 or 2 sentences on this. Write down
we use hash function. We use hash function along with key. We use hash function along with key to get the HMAC code. To get the HMAC code. Full stop. Here the key which we will be using is secret key. Here the key which we will be using is the secret key, which is shared between sender and receiver. Which is shared between sender and receiver. Full stop. We have to generate S bits. We have to generate S bits. ब्रैकेट में लिखो K plus. We have to generate S bits. Okay. ब्रैकेट में लिखो K plus. K ऊपर में छोटा सा प्लस. K plus ब्रैकेट क्लोज from secret key capital K. आपने क्या लिखा है? We have to generate S bits. ब्रैकेट में आपने लिखा कैपिटल K plus S bits nothing but K plus इसमें लिखा because this K will generate K plus. Okay. K plus bracket close such K plus what have you done? K plus from secret key capital K. From secret key capital K. From secret key capital K. Such that we have to pad zeros. On left hand side. On left hand side of capital K. Until length becomes B bits. Until length becomes B bits. Okay. So we'll see what is this. Until length become B bits. Write down. Therefore K should be such that it should lie between 0 and B bits. Such that 0 and B bits. ब्रैकेट में लिखो 0 less than K less than B. 0 less than K less than B. 0 less than K less than B. Therefore, K should be such that I am talking about the secret key. K should be such that it should lie between 0 and B bits. Okay. Now B bits are the specific bits. They are the specific bits. Okay. I do not know the value of B bits, but it should be between 0 and B bits. 0 and B bits. Okay. Next, you can write down if K is less than B. If K less than B, we
have to do padding. We have to do padding. We have to do padding. We have to do padding. Okay, we have to do padding. अब इसका क्या मतलब होता है? We have to do padding. Now suppose the value of k is less than b. Okay, if it is b, it is okay, but if the value of k is less than b, already I have told you that your k should lie between 0 and b. Okay, if the value of k is less than b, then we have to do the padding. We have to do the padding. Okay, we have to do the padding so that the block size of the plain text should be b bits. यानी ये एक मैसेज b bits, ये एक मैसेज b bits. That means your whole total message should be in the form of different blocks of plain text messages. Each block of b bits. Each block of b bits. Each block of b bits. Okay, and for that we have to do the padding. For that we have to do the padding, and the padding should be done on the left hand side. The padding has to be done on the left hand side. Okay, you have to add zeros. You have to add zeros. The padding of zeros. Okay, अगर मैं लिखता हूँ, for example, if I am writing down 4, so in this binary you will write down this as 0 1 0 0. Okay, 0 1 0 0. And if you are doing padding on the right hand side, what will happen? It will become 0 1 0 0 0, which is nothing but what? 1 2 4 8. This becomes 8 decimal number. Okay, but if you do the padding on the left hand side of this, then it becomes 0 0 1 0 0, and the decimal number for this is again the same number, which is 4. Okay, so here you have to pay attention that the padding of zero should be done on the left hand side. If the padding is done on the right hand side, then you will be in trouble that that particular number may be some different number. Because I am interested in 4, I have done the padding on the right hand side. The binary number comes to be 0 1 0 0 0, because this is the padded number on the right hand side. Then the decimal equivalent number becomes 8, which is wrong. Because I am interested in 4 and I am getting 8. So always the padding has to be done on the left hand side. The padding has to be done on the left hand side, and this padding is done so that we get the b bits. So that we have to get the b bits. Okay. So we are interested. आपने क्या लिखा? If k is less than b, we have to do padding. We have to do padding so that each block of plain text should be b bits. So that each block of plain text should be b bits. तो मैंने अभी यही बताया था. एक block b bits, दूसरा block b bits, तीसरा block b bits. Okay. So for that padding has to be done. So then also, if I could not get b bits, then there is a next part. And that part is, I am writing down here. The next part is, after doing the padding, I do not get the b bits. Then what do you have to do? Okay. Then what we have to do? Now here, when I am saying that you have to pad zeros, I do not say you have to pad only 1 0. Okay, the padding of zeros will be done till you achieve b bits. तो ऐसा कभी नहीं होगा to achieve b bits एक पैड में एक जीरो से ऐड काम होगा. No, you may require to pad 2 zeros, you may require to pad 3 zeros, you may be required to pad 4 zeros. So how many zeros you are padding, that depends upon to achieve b bits in single block of plain text. Okay, so here you should pay attention that padding of numbers of zeros has to be done on the left hand side, first point, and the second point, the number of zeros which are padded depends upon till you achieve b bits. Okay, so that is the second part. Okay,
Then comes, now there is one more thing, you just can write down predefined padded bits. Predefined padded bits. Now predefined को underline करो, predefined को underline करो, predefined padded bits, and please underline the predefined. Now padding of zeros हो गया, padding of zeros हो गया. After padding of zeros, we are now padding predefined bits. Predefined, जो पहले से defined है, So which are these predefined bits? They are iPad and OPAD. They are iPad. This is O. This is not 0. Okay. So iPad and the predefined bits are 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0. As far as 0 pad is concerned, it is predefined as 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0. 0. Now these iPads which are predefined now, these are predefined. ये भी 8 bit का है और ये भी 8 bit का है. Okay, both are of 8 bit. ये कब तक करना है? Till we achieve b by, or the multiples of b by 8 times. The multiples of b by 8 times. This is also multiples of b by 8 times. अब multiples आपको समझ में आएगा. Multiples of b by 8 करूंगा तो you will come to know that you will get the block size of plain text as b bits. So if I want to get the block size of b bits, I want the multiples of iPad, that is b by 8 times. I want the multiples of OPAD, that is also b by 8 times. But what is iPad? iPad is the predefined padded bit, which is this one, and for OPAD, this is also predefined padded bit, which is this one, which is this one. You will understand this more clearly further जब हम आगे और सीखेंगे. Okay, so remember the padding of zeros. After padding of zeros on the left hand side, then there is a predefined padded bits which is of 8 bits. iPad and OPAD. iPad कहाँ पे use करना है, OPAD कहाँ पे use करना है, we'll see further. And iPads are actually, these are the multiples of b by 8 times, so that my each block of plain text should be of b bits. Okay. इसके बाद you just write down one sentence. ये लिखने के बाद एक sentence लिखो. Before applying इसके बाद जो लिख रहे हो उसको नोट में लिखो. नोट में लिखो. Before applying the hash function, मैंने बताया था प्योरली जो hash function है, that is applied over the plain text message without using the key. अब मैं नोट में क्या लिख रहा हूँ? मैं लिख रहा हूँ कि before applying the hash function, write down, to the plain text message, we have to pad predefined padded bits. We have to compute लिखो. Compute is a good word. We have to compute predefined padded bits. We have to compute slash append भी लिख सकते हो. We have to compute slash append predefined padded bits. Predefined padded bits. Full stop. ओके, बस दैट इज अ नोट. अभी आगे देखो मैं क्या कर रहा हूँ. नाउ अभी तक आपने जो लिखा है उसका जस्ट, व्हाट इज द जस्ट ऑफ दैट? प्लीज पे अटेंशन. व्हाट इज द जस्ट ऑफ दैट? आई हैव k plus, and you know the k plus. Okay,
You know the K plus? This K plus is XORed with this K plus, that is padding of zeros on the left hand side, is XORed with iPad, ये pad, this iPad. Okay, K plus is XORed with iPad to get S1 bits, and what is the size of S1 bits now? B bits. The size of S1 bits is a B bits. Now, जैसे अपन ने iPad में अपन ने 00110 किया था, we should be the multiples of B by 8 times so that it becomes B bits. Okay, and for OPAD, now out of this iPad and OPAD, initially I am using this iPad, and this iPad is XORed with the K plus, and you know that K plus is generated from the secret key K. The K plus is generated from the secret key K by padding zeros on the left hand side. Okay, so this K plus when XORed with iPad, अभी OPAD हम बाद में यूज करने वाले, इसलिए हम इसके बारे में बात नहीं करें. Okay, so this iPad is XORed with K plus to get S1 bits. Okay, to get S1 bits. And this S1 bits का size कितना है? B bits. The size of S1 bits is B bits. Okay. After that, write down. Please write down. After getting S1 bits, append these S1 bits. After getting S1 bits, append these S1 bits with the plain text message. Okay, और उसके नीचे लिखो draw करो. Now see here what I am drawing. Now when you append this S1, see here now S1 is appended with the plain text. Okay, and this is your plain text. See the plain text में क्या लिख रहा हूँ? Y0, Y1, ... Y L minus 1. Size of S1 B bits. Size of Y1 B bits. Size of Y1 B bits. ... Size of Y L minus 1. This is also B bits. Now this is your plain text message. I have told you that it has to be broken into each block of plain text of B bits. So that's why Y0 B bits, Y1 B bits, ... Y L minus 1 by B bits, and S1 जो हमको यहाँ पे हमने generate किया है by XORing iPad with the K plus, that is also appended with the plain text message. Now can you see that I am using hash function on this now? जो हम पहले सिर्फ purely message पे करते थे without using the key. But can you say that key जो हम use कर रहे थे, we are not using the key as it is, but we are doing some processing. What is that processing? K से हमको K plus मिला. K plus को हमने iPad से XOR किया. iPad is what? It is the predefined padded bits. Can I say now this predefined padded bits is nothing but this is the pre-computed message. Hash function message पे यूज करने के पहले हमने कुछ कंप्यूटेशन किया. तो ये सब करने के बाद ये जो S1 मिला वो हमने यहाँ पे मैसेज को अपेंड किया. लेकिन यहाँ तक बात खत्म नहीं हुई, इसके आगे भी है, क्योंकि हमको O पैड भी यूज करना है. तो हमको ये मिल गया. हमको क्या मिला? S1 मिला, Y0, Y2, ... YL minus 1. Write down where L is equals to capital L. ये जो L है ना, उसका क्या मतलब है? Well, L is equals to number of plain text blocks. Number of plain text blocks. Number of plain, बराबर है ना? एक ब्लॉक, दो ब्लॉक, तीन ब्लॉक, 4 ब्लॉक ... तो हम Y0 से स्टार्ट कर रहे, तो हमको L minus 1 लिखना पड़ेगा. अगर हम Y1 लिखते थे तो हमको डायरेक्ट L लिख सकते थे. ओके, so if it is Y0, it is L minus 1. So where L is equals to number of plain text blocks. नीचे लिखो
where y0 equals to plain text y0, or you can say first plain text block, या फिर सिंपली लिखो y0 is equals to plain text, and what is b, small b, that is size of plain text, size of plain text, size of plain text, size of plain text, size of plain text. yes, आगे लिखो now apply hash function. अब तक मैंने हैश फंक्शन यूज किया नहीं किया, अभी मैं इस पे हैश फंक्शन यूज कर रहा हूं, ठीक है. अप्लाइंग, ऐसे लिखो, नाउ अप्लाइंग हैश फंक्शन एल्गोरिथम, नाउ अप्लाइंग हैश फंक्शन एल्गोरिथम, और ब्रैकेट में लिखो वो कौन सा एल्गोरिथम है, वो कौन सा एल्गोरिथम है. दैट कैन बी, ब्रैकेट में लिखो, it can be SHA-512 comma, it can be SHA-512 or SHA-1 or SHA-256, bracket close. they are secure hash function. तो हम कौन सा भी हैश फंक्शन यूज एल्गोरिथम यूज कर सकते हैं. ओके, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया SHA-512, SHA-1, SHA-256, bracket close. So that thing I can show on the that now आपने जो लिखा, that thing I can show on the using the block diagram. वो देखो क्या होगा. Now this is your hash. You are using the hash function. Now you are using the hash function on this. Okay. Now you know that the input to the hash function is IV, initialization vector. Please go back to 512, SHA-512. Okay. So I am using the hash function. The input is IV. Okay. And the size of IV is n bits. The size of initialization vector is n bits. Okay. Now this is the output of this is again n bits. The output of this is again n bits. ब्रैकेट में एक काम करो, ब्रैकेट में मत लिखो, n bits लिखो, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखो that is fixed length कोड, फिक्स लेंथ कोड, क्योंकि आपको पता है हैश कोड इज अ फिक्स लेंथ कोड, दैट इज ऑथेंटिकेटर, यू ऑलरेडी नो दिस. ओके, दैट इज अ फिक्स लेंथ कोड. मैच इज आल्सो फिक्स लेंथ कोड. so output of the hash function is a fixed length code, so that is why it is n bits. It is n bits. Okay, so when you apply the hash algorithm, for example SHA-512, on this particular message and the S1, you will get the output as n bits, which is a fixed length code, okay. And the input to the initial hash, क्योंकि मुझे पता है initial hash का input, remember 512 जो हमने input लिया था, that was IV, that was IV. okay, यहाँ पे आपको लिखना है तो ब्रैकेट में आप कर सकते हो. I am using SHA-512. I am using SHA-512. It can be SHA-1, it can be SHA-256. so input is IV, that is n bits. That is n bits. Okay, यहाँ तक खत्म नहीं हुआ. We have to do again what? ये ब्लॉक डायग्राम बनाया ना, ये वाला, उसके नीचे ना हमको फिर से लिखना है. We will not write, will continue with the same block diagram. वो ज्यादा समझ में आता है. इसके बाद क्या करो, will continue in the same block diagram further. आपको जो n bits मिला है, ये वाला, आपको जो n bits मिला है, नीचे एरो करो, यहाँ पे लिखो append bits, so that length should be b bits, so that the length should be b bits. अभी इसका मतलब यह है कि we have to now repeat, we have to do the repeat now, we have to do the repetition. कौन सा repetition? जो हमने repetition किया था. What was that? That I have to again append zeros to the left hand side. Then after I do that, I have to
प्री डिफाइंड बिट्स मुझे ऐड करना है, लेकिन पहले मैंने लिया था आई बिट, अभी मैं लूंगा ओ बिट्स, सॉरी ओ पैड। पहले मैंने लिया था आई पैड, अभी मैं लूंगा ओ पैड। ओके, तो यहाँ पे जो मैं लिखा हूँ एरो के साइड में, दैट इज अपेंड बिट सो दैट द लेंथ शुड बी बी बिट्स, लेंथ शुड बी बी बिट्स, लेंथ शुड बी बी बिट्स। ये होने के बाद, ये होने के बाद मैं ऐसा करता हूँ, आई विल डू वन थिंग, ये एरो का, ये एरो आपने किया, इसके बाद जो मेरा मैसेज आएगा और जो मेरा S2 बिट आएगा वो कैसा होगा, मैं ये साइड में कर रहा हूँ, यू कैन डू अलॉन्ग विथ मी नाउ। इसका मतलब क्या होता है, आई एम नाउ रिपीटिंग द सेम प्रोसीजर जो पहले किया था। वो प्रोसीजर क्या थी, के प्लस एक्सॉर, के प्लस एक्सॉर, पहले मैंने लिया था आई पैड, अब मैं लूंगा ओ पैड, ओ पैड, ओके ओ पैड, विच विल गिव मी, पहले मैंने लिया था S1, अभी मैं लेता हूँ S2, वो था मेरा बी बिट्स, ये भी मेरा है बी बिट्स, ये भी मेरा है बी बिट्स, ओके, एंड दिस बी बिट्स is appended, this b bit is appended so that, see it carefully, S2 आ गया, S2 आ गया और मेरा मैसेज बाकी का। लेकिन ये क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैसेज नहीं है, ये देखो क्या है, here you will understand, and that is what, ये देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, this is the hash code or the hash function which is applied using the key k, using the key k on n bits, on n bits, on n bits। अभी जो मैंने हैश कोड जो जनरेट किया है, ये हैश कोड मेरा जनरेट हुआ फिक्स लेंथ कोड, ये वाला, ये हैश फंक्शन यूज करने के बाद ये मुझे हैश कोड मिला। ये हैश कोड जो मुझे मिला है वो ही मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है ब्लैक कलर में, ये ब्लैक कलर है, ये ब्लैक कलर। और लेकिन मैंने ये मिलने के, ये जो मिला मुझे, इसका आउटपुट है, इसका आउटपुट है, ये ब्लैक वाला, ये इसका आउटपुट है, ये जो मैंने आउटपुट बनाया ये ब्लैक वाला, ये इसका आउट, दैट इज, दिस इज द आउटपुट ऑफ दिस, दिस इज द आउटपुट ऑफ दिस। नाउ वॉट एवर आई हैव जनरेटेड हियर, नाउ दैट इज अपेंडेड, अपेंड बिट सो दैट द लेंथ शुड बी बी बिट्स, तो इसको मैंने अपेंड किया है S2 बिट से। एंड हाउ डू गेट S2, S2 you get by XORing k plus with O pad, k plus k plus XOR with O pad, which will give me S2. This S2 is B bits. Now this B bits is appended. यहाँ पे आप कर सकते हो एरो पे append, append, किसको append किया, ये ब्लैक वाले को। ये ब्लैक वाला कहाँ से मिला, ये वाला फिक्स लेंथ कोड, ये ब्लैक वाला कहाँ से मिला, आफ्टर यूजिंग हैश फंक्शन, इसे मैंने ये ब्रैकेट में क्या, इसमें क्या लिखा है, यूजिंग हैश फंक्शन ओवर द n bits, over this you can say this n bits, because इसका आउटपुट भी n bits है, which is a fixed length code, which is a fixed length code, okay, so you can say that hash function is applied over the n bits by using the key k, by using the secret key k, by using the secret key k, तो इसलिए मुझे ये ब्लैक वाला मिला और इसको मैंने अपेंड किया S2 से, जो मुझे ऐसा मिला, जो मुझे ऐसा मिला। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। इफ किसी को कुछ भी डाउट होता है प्लीज आस्क मी, वहीं पे मुझे पूछा करो, ओके। अभी इसके बाद देखो क्या करना है। नाउ आई हैव डन विथ आई पैड, आई हैव डन विथ ओ पैड, मैंने दोनों भी पैड यूज किए। इसके बाद क्या है, अगेन ये जो आया है ना, इस पे अगेन अप्लाई, यहाँ पे लिखो, फिर से एरो बनाओ और यहाँ पे फिर से लिखो अगेन अप्लाई द हैश फंक्शन, अगेन अप्लाई हैश फंक्शन। अभी मुझे बात बताओ, मैंने इनिशियली जो हैश फंक्शन यूज किया था वो किस पे यूज किया था, S1 y0 y1 डॉट डॉट डॉट, ओके, उस पे मैंने हैश फंक्शन यूज किया था और वो हैश फंक्शन यूज करने के बाद मुझे ये मिला था, विच इज नथिंग बट दिस। अभी इस पे भी मैंने अपेंड किया S2 और S2 अपेंड करने के बाद भी मुझे हैश फंक्शन यूज करना है। इसका मतलब using, now pay attention to my words, whatever I'm saying now, after using the iPad you get S1,
After you get S1, append that S1 to the message and apply the hash code and apply the hash function. After applying the hash function, use the OPAD to get the S2 bits, append the S2 bits with that hash code and again apply the hash function and again apply the hash function. तो ये यहाँ पे वही कर रहा हूँ मैं. S2 मैंने अपेंड कर दिया, अभी मैं फिर से अगेन अप्लाई हैश फंक्शन, अगेन अप्लाई हैश फंक्शन. अब इसका आउटपुट क्या आ रहा है, इसका आउटपुट क्या आ रहा है, नीचे में छोटा सा बना दो. इसका आउटपुट है n बिट्स, इसका आउटपुट है n बिट्स, इसका आउटपुट है n बिट्स. n बिट्स लिखो और उसके नीचे लिखो लगे तो ब्रैकेट में हैश कोड, हैश कोड नीचे में बॉक्स बनाना, उसमें n बिट्स लिखना और ब्रैकेट में लिखना हैश कोड, और ब्रैकेट में लिखना हैश कोड. और ये बॉक्स के साइड में लिखो, उसके साइड में ही लिखो which is called HMAC code, which is called HMAC code. ये देखो लास्ट में मुझे HMAC कोड मिला, लास्ट में मुझे HMAC कोड मिला, लास्ट में मुझे HMAC कोड मिला, लास्ट में मुझे HMAC कोड मिला. अभी ये जो मैंने ब्लॉक डायग्राम बनाया ना, अभी ये पूरा मैं एक कंसाइज ब्लॉक डायग्राम बनाता हूँ. जिन लोगों को ये समझ में नहीं आया प्रॉपर, वो ब्लॉक डायग्राम में समझो. ओके, मैं बनाऊंगा और सिखाऊंगा, मैं बनाऊंगा और सिखाऊंगा. ओके, इफ दिस इज ओके शैल आई रब दिस. अभी ये जो मैंने सब बनाया ना, ये कंसाइज में एक ब्लॉक डायग्राम बनाता हूँ जिसमें ये सब देखने को मिलेगा, ये सब कंसाइज बनाऊंगा. And while drawing the block diagram, even I will explain you. Okay, in that जिन लोगों को ये properly नहीं समझ में आया, उसमें फिर से समझो. If it is okay, shall I rub this? Any one of you please acknowledge. Yes, sir. Okay. अब इसके लिए मुझे ये ऐसा करना पड़ेगा. Is it visible? The board is visible? Yes, sir. Okay. Now the block diagram which I will be drawing, that is a concise one, and if the question is asked in the exam, you have to draw the same block diagram. इसके पहले मैंने जो दिया था, that was in accordance with the explanation, I was drawing the block diagram. Now here the concise one. Now please pay attention, मैं क्या कर रहा हूँ. See here, first generate the key plus by using the secret key K. Secret key K is shared between the sender and the user. So key plus, do XOR operation, do the XOR operation on iPad, okay. iPad is, that is the predefined bits, which is 0011 0110. Okay, and this repeat B by 8 times, B by 8 times. That is multiple, it should be multiples of B by 8 times. That is the meaning. Okay, so when you do this, you will get S1 Y0 Y1 ... YL minus 1. Size of S1 B, size of S1 B bits, size of Y1 B bits, B bits ... B bits. ये हो गया. Next, on this use the hash function. On this use the hash function. Use the hash function. So this is hash. The input to this is your
initialization vector of n bits, please correlate with the SHA-512. IV of n bits, the output of this then is n bits. It is of n bits. Okay. Now, how do you get this n bits? How do you get this n bits? By, ये देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, by using the hash function. मैं यहाँ पे रेड से लिखता हूँ. ये n bits कैसे मिला? By using the hash function. That is by using the hash function over s appended with plain text message. S1 appended with plain text message. S1 appended with plain text message. That is why s hash function over s appended with plain text message. ये होने के बाद क्या करना है? ये होने के बाद pad to b bits length. Pad to b bits length. वो उसका मतलब क्या होता है? अगेन k plus XOR with OPAD. यहाँ पे आपका OPAD is predefined, that is 0101110 और repeat b by 8 times. वही है, b by 8 times. Repeat b by 8 times. ये मैं फिर से ऐसा ड्रॉ करता हूँ. हाँ, रिपीट b by 8 times. तो इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? S2 आएगा. S2 का लेंथ इज हाउ मच? एक काम करते हैं, यहाँ पे जैसे मैंने बनाया था वैसे ही करता हूँ. सो आउटपुट ऑफ दिस इज एक्चुअली अपेंडेड विथ, हाँ, या इसका आउटपुट मिलता है आपको S2. इसका आउटपुट मिलता है S2 और ये मिलता है आपका B बिट्स. ये आपका है B बिट्स. ये आपका है B बिट्स. ओके. ये होने के बाद अगेन use the hash function. This is the last time I am using. This is a hash function. But here जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था, I will do one thing. यहाँ पे मैं बनाता हूँ ब्लैक से. This is your hash which gives me again n bits. लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? हैश फंक्शन कौन सा यूज कर रहा हूँ? जैसे मैंने हैश फंक्शन इज यूज ओवर द एस अपेंडेड विद m. यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा हैश फंक्शन अपेंडेड विद s2 appended with h of s appended with m, and this is whole bracket. यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? हैश फंक्शन applied over the s2 appended on the output of this hash, that is n bit. And how do you get hash function appended on s? अगर आपको मोर स्पेसिफिक चाहिए तो यहाँ पे क्या करो? s1 लिखो. ये क्योंकि s1 है ना, और यहाँ पे भी s1 लिखो, तो या then it will be more clear. h appended hash function applied over the s2 which is appended with the hash function of s1 appended with plain text message m. ये वाला. तो ये वाला जो है वो ये तो, और s2 है जो यहाँ पे. अब ये आ गया, ये मेरा लास्ट है. सो कैन आई से, एक मिनट, यस, यहाँ पे मुझे ये बनाना पड़ेगा IV that is of n bits, IV of n bits. Okay, then n bits you get, and this is what, this is your last one. This is your hash code, which is bracket में लिख सकते हैं आप HMAC. I hope you have understood now. तो एग्जाम में यही बनाना है और इसको एक्सप्लेन करना है. एग्जाम में यही बनाना है और आपको एक्सप्लेन करना है. किसी को डाउट है? एनी वन ऑफ यू हैव एनी क्वेरीज? प्लीज आस्क मी नाउ.
This one I have explained twice now. First one with the explanation, now with the full concise block diagram. अगर नहीं समझ में आया, then for those students, while writing down the steps, try to understand. Write down the steps. All of you write down the steps. Number 1. Write down the steps. Number 1. Select the K. Select the K. Select the K. Select the K. Bracket में लिखो 0 less than K less than B. 0 less than K less than B. 0 less than K less than B. Bracket close. Bracket close. In the same step, write down next line. If K less than B, if K less than B, comma, pad zeros on left side. Pad zeros on left side. Until K equals to B. Until K equals to B. Until K equals to B. और ब्रैकेट में लिखो 10 we get K plus. K के ऊपर प्लस 10 we get K plus. तो अभी आपको पता चला K plus कैसे मिलता है after padding zeros. Okay, after padding zeros. और हमको कब तक पैड करना है? जब तक K की लेंथ B बिट्स इतनी होती नहीं. ओके, नेक्स्ट सेकंड स्टेप. XOR K plus with iPad. XOR K plus with iPad. XOR K plus with iPad to get B bits. To get B bits. To get B bits. और ब्रैकेट में लिखो S1. ब्रैकेट में लिखो S1. जो स्टेप्स लिख रहे हो इसके साथ कंपेयर करो. ये ब्लॉक डायग्राम के साथ कंपेयर करो. मैं जो बता रहा हूँ वो यही है, कुछ दूसरा नहीं है. ओके, तो सेकंड स्टेप इज XOR K plus with iPad to get B bits. ब्रैकेट में आपने लिखा S1 bits. ओके, थर्ड वन, append S1 with plain text message M. Append S1, ये वाला. Append S1 to get the with plain text message M. To get the plain text message M. Number 4. Apply SHA-512. Apply SHA-512 on ऐसे लिखो on S1 append with M. S1 append with M. ब्रैकेट में लिखना S1 append with M. तो आपने क्या लिखा? apply SHA-512 on S1 append with M, ब्रैकेट क्लोज, to get n bits. To get n bits. ये वाले देखो, ये bits. To get n bits. To get n bits. ये हो गया फोर्थ वाला. फिफ्थ वाला लिखो pad n bits. Pad n bits until length equal to B bits. Pad n bits. I do not know how many bits I have to add, but that should be equal to B bits. Okay, so pad n bits until length equal to B bits. Until length equal to B bits. Number 6. हम यहाँ तक पहुंचे. ये ब्लॉक डायग्राम भी देखो और स्टेप्स भी याद रखो. नेक्स्ट वन क्या है? XOR K plus with OPAD. XOR K plus with OPAD to get B bits. To get B bits. ब्रैकेट में लिखो S2. To get B bits. ब्रैकेट में लिखो S2. ये भी आपका ब्लॉक डायग्राम में ये भी लिखना है, ये आपका B बिट्स है, क्या से यहाँ तक, और ये बाकी वाले ऑलरेडी B बिट्स है. ओके, so XOR K plus with OPAD to get B bits, that is S2. Seventh step, append S2 with output of step 5. Append S2 with output of step 5. Append S2 with output of step 5. That is ये लिखो, that is H in bracket S2
appended with H in bracket S1 appended with M. ये पूरा लिखो. Apply S2 with output of step 5, that is S2. Wait. आपका स्टेप वेट ये मत लिखो. स्टेप 5 लिखो. दैट इज मत लिखो. वो कट करो क्योंकि हमको वो नेक्स्ट इसमें आने वाला है. ये प्लीज रब कर दो. सीधे लिखना है आपको स्टेप 7 में. अप्लाई अपेंड S2 विथ आउटपुट ऑफ स्टेप 5. बस इतने लिखो. अभी लास्ट वाला स्टेप लिखना है. स्टेप नंबर 8. स्टेप नंबर 8 लिखो लास्ट वाला. अप्लाई SHA-512 on step number 7. Apply SHA-512 on step number 7. That is, अभी यहाँ पे लिखो. That is H S2 append H S1 append M. H S2 append H S1 append M. So that the output will be hash code. The output will be hash code in bracket HMAC code. In bracket HMAC code, bracket close, of n bits. The last one. Of n bits. So I hope you have understood this. हर एक algorithm को पूरा 1 घंटा लगता है and कभी-कभी ज्यादा होता है, but I try to complete within an hour. Sometimes it may go more than that. Okay, but some algorithms require proper explanation with a block diagram. Okay, so please revise whatever I am doing this. Please revise properly so that it will be understood here. और क्लास में जब आप प्रैक्टिस करते हो या फिर रिवाइज करते हो घर पे आप, then you won't be find it difficult to study during your PL, that is your study leave. Okay, because sometimes it might happen that it may jumble here and there. कभी मिक्सअप होता है. So always try to learn the concept here and itself. जब मैं सीखा तो तभी समझा करो, तभी सीखा करो. So that once you revise at home, after I do explanation, even you have the recordings of this explanation, you can see the recording and try to understand. Okay, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं अभी नहीं करती मैं बाद में करूंगी. ऐसा don't do such type of activity. Okay, you try to understand here itself, and if you have any problem, then you can ask me thereafter. If this is okay for you, Priyanka ma'am has taken the attendance. Yes sir, I have taken. Okay. So किसी को अगर doubt नहीं, they can leave the session now. Those who have doubt can stay here and ask me. Sir. हाँ.